Praise be to Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. I am Tanveer Anwar. Welcome to Tanveer's Ideas. In this video, I will discuss the most important synonyms for PPSC, FPSC, CSS, and PMS. So, this video is going to be important. First of all, I would like to share with you that I will make a series of videos on synonyms. So I will follow alphabetical order, the alphabetical order of English ABC. So acquit, the first word is acquit. Declare someone innocent or find innocent. Exonerate, its synonym is exonerate, exculpate, vindicate. So these words have similar meaning. Its use in a sentence is the Supreme Court acquitted Imran Khan in foreign funding case. So ये acquit verb है, ठीक है. So इसकी जो class है वो भी मैंने describe की है. Then axiom word, next word है axiom, ये noun है. Self-evident proof, necessary truth which is based on assumption or a principle. उर्दू में कहेंगे मुसलमान बात या कुलिया. All the axioms of Darwin's theory of evolution cannot be considered as absolute truth. तमाम जो असूल हैं डार्विन की थ्योरी के वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं ख्याल किए जा सकते. एवोकेशन, नेक्स्ट वर्ड एवोकेशन है, ये नाउन है. हॉबी, लेयर परस्यूट or self-interest. Self-interest. So उर्दू में कहेंगे मशगला. Even after becoming a teacher, farming is my avocation. अतः कि टीचर बनने के बाद भी फार्मिंग मेरा मशगला है. So इसका ये यूज हो गया. Next word is avid. Avid mean शौकीन. उर्दू मीनिंग होगा शौकीन या मुश्ताक. ये एडजेक्टिव है. सो ईगर, एंथुजियास्टिक, zealous, fervent, पैशनेट, आर्डेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे, ठीक है. सो इसका यूज आई एम एन एविड रीडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आई एम एन एविड रीडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज का मैं एक शौकीन जो रीडर हूं. एवरेस एडजेक्टिव है. बुखल, जो एक्सट्रीम ग्रीड को कहते हैं. एक्सट्रीम ग्रीड, बहुत ज़्यादा जो लालच है उसे कहेंगे या हवस को कहेंगे, ठीक है. सो कवेटुअसनेस एंड क्यूपिडिटी इसके सिनोनिम्स होंगे. So इसका यूज, your decision to marry that girl is driven by avarice. तुम्हारा उस लड़की के साथ शादी करने का जो फैसला है वो बुखल से ड्राइव किया गया है. It's end of the video. You have to wait for the next video. Allah Hafiz.